Good morning, everybody. Yes. So I'll just Was introduce you. So, okay. hello everyone. This is Tenzing Sering. He was born in Darjeeling and he did his schooling from St. Joseph's Dehradun, and he's my senior from St. Joseph's. And he's a professional chef, and he is a certified Ayurvedic practitioner, and it's his passion to use food as a fuel for healing our bodies. And he won a gold medal in 1998, where 72 countries participated, and it was held in Moscow. And he was also a personal chef to President Republic of Kalmuk Russian Federation from 2008 to 2010. And I'll now ask Tashi to enlighten us and with what he has learned over the years. Over to you, Good. Tashi. Thank you, Alka. Good morning, everybody. I would like to thank Alka first for inviting me to speak something regarding eating healthy, and like to thank Nidhi for giving my name to you, Alka. Thank you. So, regarding our topic, eating healthy means there's lots of ways of eating healthy. Eating healthy means we just when you say eating healthy, in our mind it comes up that just to eat healthy foods and something like that. But that is not the only thing to keep you healthy. There's many way. First of all, the sanitation, it's healthy systems. The the environment should be healthy. The cooking system should be healthy. The way of cooking should be healthy. The product which you buy from the market, that should be healthy. So with all these combinations, then we can really say it's healthy. So if you go on the whole topic, it'll take very long time. It will take maybe a weeks. So I'll give you a shortcut way, and maybe it will help everyone regarding the health, and hope everyone may stay healthy. As Alka has mentioned that uh, I use Ayurvedic formula in my restaurant. Yes, definitely I use Ayurvedic formula in my restaurant, because in Ayurveda it says the food is a medicine. आयुर्वेदिक में यही लिखा गया है कि खाना Right. खाना ही औषध है. तो the reason is we use spices. Mostly in Indian culinary, Indian cuisine, we use spices. So through my research, why they use spices is a different way. That also, when I was a chef, I didn't knew anything about the spices or the herbs. Since I joined my Ayurvedic studies, then and there I came to know what the spices are and what they are meant for, and what their duty is, like what they curable, what disease they are curable for. Mhm. So पहले जमाने में जब आयुर्वेदिक, I can speak in Hindi, हल्का. Right. Yeah. क्योंकि आयुर्वेदिक में जब मैंने रिसर्च किया था, तो मसाले को औषध के रूप में दिया जाते थे. तो इंसान उनको खाने के लिए अकड़ जाते थे. तो कोई नहीं खाते थे, कोई उनके कहते थे कि उसके टेस्ट में तीतापन है या कड़वापन है. सो इसीलिए वो नहीं खाते थे. तो किसी ने इन मसाले को एक खाने के रूप अंतर, जो हम उसको फ्लेवर दे सके, जो स्पाइसेस के रूप में वो खाना में तब्दील कर दिए थे. So then and there we start using those spices as a medicine in Ayurveda. But in typical nowadays, all the chefs they use to give flavor, not as a medicine. Because Mhm. जब भी मैं भी जब ताज में था, तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ये पता था कि ये मसाले तो मसाले हैं, बस इनको स्वाद देना है बस, और कुछ काम नहीं. Then later I came to know that masala, this is not a masala, ये herbs है, ये Mhm. दवाई है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं. So that's why in my research, the masala are meant, which we use in a curry today, is actually a medicine. Okay. So if you can add in the amount quantity, अगर हमें उसकी अंदाजा पता चले, मसाले के बारे में पता चले, तो आप हर साल तक, हर जन्म तक आप स्वस्थ रह सकते हैं. बस यही है कि हमें उनकी मात्रा पहचाननी है, Mm. और कब खाना है, कैसे खाना है,
क्यों खाना है, ये सब हमें जानकारी जरूरी है। और ये जानकारी के लिए समय तो बहुत लगेगा, शायद आज समय कम ही हो, फिर भी मैं आप सबसे थोड़ी सी जो, यानी कि हम कहते हैं कि हिंदी में झट मंगनी पट शादी, उसी की तरह से मैं आपको जल्दी जल्दी जो मैं कह सकता हूँ वो आपको कह, देखिए खाने हम सब खाते हैं, लेकिन हम जितने भी खाने खाते हैं हम उसे चबाते अच्छे नहीं है। हम्म, तो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसे अच्छी तरह से चबाना चाहिए, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ज्यादा जोर लगाने नहीं पड़े और हमें पूरे न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो जैसे कि हम खाने खाते हैं तो इसकी जो सिस्टम है, दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो डाइजेशन होती है या तो फर्मेंटेशन होती है। हम्म, अगर अच्छी तरह से डाइजेशन हो गया दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ दैट इज फर्मेंटेड एंड फिर वो मूल के नाम से निकल जाते हैं। तो जब मूल हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रह जाते हैं तो फिर उसमें अम्ल बन जाता है, यानी कि पॉइजनस। तो यही पॉइजन हमारे शरीर में फिर सारे दिक्कतें आने शुरू हो जाते हैं। सो फॉर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको खाने अच्छी तरह से चबाने चाहिए। आयुर्वेदिक में लिखा है कि जितने आपके दांत हो उतनी बार चबाना चाहिए आपको। तो विदेश में या तो अमेरिका में सबके पास उतना समय नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन इंडिया मेरे पास बहुत सारे कैंसर के पेशेंट होते थे, तो वो चबा नहीं पाते थे अच्छा, दर्द की वजह से हम्म, उनकी। तो मैं उन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड करके देता था ओके, खाने को। तो द रिजल्ट, यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले। इवन हियर व्हेन आई कोविड के पहले से मेरे पास, मेरे रेस्टोरेंट में जितने भी पेशेंट्स कस्टमर्स हैं वो सब पेशेंट्स हैं। सो इट्स अ वेरी, दे गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। और गोरों की ये आदत है कि अगर उनको जो कहे जाते हैं तो वो कर लेता है, राइट, और हमारे बंदे क्या मानता नहीं है वो। सो दैट्स द वीक पॉइंट ऑफ अस। और एक अगर मान भी गया तो जब उसकी रोग ठीक हो जाता है तो दे डोंट फॉलो द path, यस, again they'll start go to the old thing, no? So that's the reason of healthy about healthy eating. अब दूसरी बात है हेल्दी ईटिंग, खाने के पहले या खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी। अगर आपको पीना है तो यू कैन ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी आप ले सकते हैं खाने के टाइम में, लेकिन ठंडे पानी नहीं। ठंडे पानी आपको सपोज एग्जांपल, अगर खाना खाते वक्त आप ठंडे पानी पी लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन श्रिंक हो जाती है। कि उस उसकी एग्जांपल तो आपको पता है कि आप जो प्लास्टिक में सामान लेके फ्रोजन में डाल देते हो तो वो श्रिंक हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदरिया श्रिंक हो जाते हैं, और अंदरिया श्रिंक होने के बाद जो भी जितने भी खाने में हमारे लिक्विड जो है वो स्क्वीज होके निकल जाते हैं। ओके, एंड फॉर दैट रीजन कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट्स। तो कॉन्स्टिपेशन इज नोन एज मदर ऑफ द होल डिजीज इन आयुर्वेदा। सो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको खाने के वक्त ठंडे पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी के सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए वैसे। तो डू दैट्स आल्सो एटलीस्ट 1 hour बिफोर 1 hour आफ्टर। ओके, That is a maximum timing. Otherwise, it depends on your metabolism. क्योंकि और it depends on what food you consume. अगर आप हल्का पुल्का लेते हैं तो it will take around 40 to 50 minutes. अगर आप बहुत oily, fatty, spicy लेते हैं तो then it will take about 2 to 3 hours. So regarding that also, you have to. लेकिन एक घंटे पहले या एक घंटे बाद पानी बिल्कुल नहीं पिए, क्योंकि पानी न पीने का कारण क्या है, हमारे जो व्हेन वी कंज्यूम इट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एसिड सप्लाई होने शुरू हो जाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करता है या खाने को पचाता है। तो वो ठंड हो जाता है, तो ठंड होने के बाद हमें पूरे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां या रोग आने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन कि आप ठंडा मत पीजिए। दूसरी बात है ऑयली मत पी लीजिए।
अभी देखिए यूट्यूब में या जहाँ भी हो, जिधर मुझे मेरे 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 साथ बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, CNN वाले, BBC वाले, न्यूयॉर्क वंस वाले सब आए। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि शेफ, दुनिया में दो किस्म के शेफ है। एक जो सिर्फ अपने पेट और पैसे बनाता है, हाँ, दूसरी जो अपने गेस्ट के शरीर के लिए सोचते हैं, दे थिंक फॉर द हेल्थ। तो इस स्पीच स्पीच की वजह से भी मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आए कि तू खुद शेफ हो गए भी शेफ की बत्ती भी वो तू बदनामी बुराई कर रहा कर। है हाँ हाँ। या बुराई कर रहा है। सो दैट्स नॉट द रीजन, बिकॉज देखो किसी के शरीर पे चोट लगाकर उसकी कमाना तो अच्छी बात नहीं है। यू कैन अर्न इन डिफरेंट वे बट नॉट इन किकिंग समबडीज स्टमक, नो। Right. सो ये बात है। तो दूसरी बात ये है कि whenever we eat consume something, सबसे पहले तो हमारे परिवार से शुरू होना चाहिए कि हमें हेल्दी ईटिंग। और हेल्दी ईटिंग के लिए देखिए पहले या तो मॉर्निंग या तो डिनर में होते हैं। और हमारे झगड़े भी जितने भी होते हैं या मॉर्निंग में होते हैं या डिनर में होते हैं, जब जमा होते हैं। एंड दैट इज नॉट अ गुड एटमॉस्फेयर। क्योंकि देखिए जब जब आपको गुस्सा हो जाते हैं तो आपकी भूख हट जाती है। ये क्यों हटती है? क्योंकि हमारे शरीर उस गुस्से को ताकत में कन्वर्ट करता है, और ताकि हमारे ब्रेन ये सोचते हैं कि मैं उसको पराजित करूं या मार के। तो जितने भी हमारे शरीर की ताकत है वो ब्रेन उसमें लगा लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड To खाने के eat वक्त या टू when angry. whenever you are in a डिनर टेबल और लंच टेबल फैमिली मेंबर के साथ। क्योंकि खास तौर पर सब जगह पे यही होते हैं पॉइंट्स, उसी जगह उसी टाइम हम जमा होते हैं, उसी टाइम में भला बुरा निकल जाता है, तो फिर इसी टाइम में तू में हो जाता है। सो दैट इज नॉट द गुड पॉइंट। गुस्सा नहीं करना चाहिए आपको, आपकी जो एटमोसफेयर है जो वो शांत होना चाहिए। सो ऐसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए तो, लेकिन देखिए अलका आई थिंक द टाइम इज वेरी, थोड़ा समय होगा, इसलिए आप मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि बस ये जो है पॉइंट्स मैंने कहा है कि आप देखिए सबसे बेहतरीन पॉइंट तो है आप खाने को अच्छी तरह से चबाइए और पानी मत पीजिए। और अब देखिए इवनिंग डिनर खाने के बाद तो आप वॉक चल सकते हैं। दिन में हम जब हिंदुस्तान में हैं तो दिन में खाने के बाद में हम नैप ले लेते हैं। ये अच्छी बात है नैप लेने, लेकिन बुरी बात नहीं है, आप नैप ले सकते हैं, लेकिन रात में नहीं, डिनर के बाद आप नैप मत लीजिए। और तीसरी बात, यूट्यूब देख लेते हैं, सब यूट्यूब पे देखते हैं, सब आजकल तो सब यूट्यूब की फॉलोवर्स है। लेकिन यूट्यूब में देखिए सब अच्छा ही कहेगा, बुराई कभी नहीं कहता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए, एक ने तो वो अपने पैरों पर लाल प्याज बांध के सोया था रात को। तो सुबह मेरे पास आया, कहते हैं कि मेरे सब शरीर पे दर्द है। मैंने कहा क्या किया? कहते हैं कि मैंने यूट्यूब पे देखा है शरीर अगर इफ यू वांट टू रिड्यूस योर फैट, रात को पैर में प्याज बांध के सोए। मैंने कहा पागल हुआ। देखो एक याद करो, जो हम जब स्कूल में भंग करने की कोशिश करते थे तो हम शोल्डर के नीचे ऑनियन डालते हैं कि ताकि हमें बुखार आए। तो मैंने कहा ये सब मत करो, नो यूज ऑफ। क्योंकि यूट्यूब में देखिए फॉलो कीजिए जो अच्छे अच्छे कहते हैं, लेकिन यूट्यूब में देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं बताएंगे। आप देखिए, आप अगर आपको जरूरत है तो वो कहेगी आप मेथी ले लो, मेथी के Actually, your दाने voice is ले लो, breaking. मेथी को भिजा लो, मेथी को सुबह पी लो। लेकिन मेथी एक उसकी तासीर जो है गर्म है, और Okay. आप ज्यादा वो ओके इफ यू टेक दैट, अगर आप मेथी ज्यादा ले लोगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जैसे कि अभी यूट्यूब में दिखा रहे हैं कि आप करेला ले लो Mm-hmm. कि आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। सही है, शुगर शुगर खत्म हो सकती है, लेकिन करेला ज्यादा ज्यादा गर्मी खा लोगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। सो देखिए सबको मिला के पीना है और मिला के लेना है। लेकिन अलका आई थिंक इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं सोच रहा हूँ कि अब आई विल फिनिश इट अप हियर बिकॉज इट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा टाइम लगेगा लिखने के लिए। आई थॉट इट्स बेटर टू हैव वन डे। अगर प्रैक्टिकली हो जाए देन आई कैन शो यू एवरीथिंग, नो।
on the table so that सिर्फ कहने से तो समझ में नहीं आएगा और समझ में आए भी तो then you don't have the proof to show it, no? So that's the reason that so सबसे बेहतर thing seasonal food जो भी मिलते हैं आप वो सीजन में खाए तो अच्छा रहेगा. अब ये अमेरिका में तो you get everything in every season. लेकिन देखिए उनको पकाने का तरीका जो है so that's also depend on healthy eating and healthy food. So what I do, I wash it very well. देखिए 70 लीटर पानी में एक ड्रॉप ब्लीच डाल दीजिए और वो पानी को सैनिटाइज करता है और उसमें आप सब्जी को भिजाइए, उसको निकालिए, then you consume it. या तो आप बहता पानी में अच्छी तरह से बहता नल में अच्छी तरह से धो लीजिए उसको, बिकॉज देखिए सब पेस्टिसाइड है. एप्पल में देखिए, क्यूकम्बर्स में देखिए, वहां पे वैक्स लगाया हुआ है सब. अभी कुछ भी आई डोंट थिंक सो इट्स नॉट ऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट से भी पूछा है. वन ऑफ द डॉक्टर हु इज इन इंडिया, she works for the agriculture department, and I asked the question yesterday only that what do we have organic in this world today? She said nothing. So that's why while consuming anything, be very careful, and especially on the sanitation. So यही सब से मैं I think I'll leave it to Alka to take another speaker to speak on behalf of this. And thank you so much for Alka calling me and giving me opportunity to speak regarding this. I hope it will help everyone, and I hope to see you soon on the next session if possible. Thank so you. I can give you some Thank more you so much. Yeah, we would ideas love to regarding that. have Thank you a so much, Alka. full one. I think we need a full 1 hour session with Tashi. What do you guys think? He has so much to offer, and he made some really excellent points. Like primarily whatever we eat, even if it's off season, we have to first digest it, right? So he mentioned that we have to chew the food properly, we have to not drink water, and some really excellent points there. And Tashi, whenever you get time, we need your full 1 hour so that we can learn Yeah, more I from think. you. Yes, Alka. I am also thinking the same thing. Yeah. If possible, we can do practically. We can come around, or I can come to your place, something so that be more realistic rather than speaking on online. But still, thank you so much, Alka, and thank you everyone. Thank you. Appreciate it. So I'll just share what I think why we should focus more on seasonal produce. So there are three major, or rather four major things I feel. First thing is that every vegetable, every produce has its own microbiome. Like if you guys are familiar with fermented foods, we chop the vegetables, we put them with salt, and then they become a potent probiotic. Why? Because they have their own microbiome, and it gets disturbed when it is off season, and also because now it has to be transported from region it is growing, like something from for in US, supposedly it might come from South America, and during that process also it is brought in cold storage, and the microbiome it gets disturbed. Now it is even possible that we might get some foodborne illnesses. Another reason is that when a produce is growing in conditions which are not conducive, which is like off season, supposedly it has to be grown in cooler weather, and now it is being grown in warm weather, it is stressed, and it will create more lectins, which are proteins which help it to protect itself. Now these lectins are very hard to digest, and when we eat this food, these undigested proteins, they become, as Tashi mentioned, it becomes like an amla. It's like a poison in our body, and then it creates a lot of autoimmune disorders because of the molecular mimicry they have sometimes with our body tissues.
So our immune system, when it is trying to attack these undigested protein, it starts attacking our own tissues, and then we can have any kind of autoimmune disorders. Yeah. So nature has its own ways, and we should respect that. We shouldn't think, oh, it is not some nature doesn't make mistakes, right? So it has its own rhythm, it has its own reason for putting everything where it belongs, like regional and seasonal produce. Why we focus on that, and why it has been so important in our culture. But now slowly, when everything is available all the time, we are just not mindful about it. And I think the poem by Nidhi is an absolute the right thing, where she has just pointed out why we need to eat that produce. And just let me share who she is. So she is Dr. Nidhi Thakur. She is a writer and poet, writing in Hindi, Urdu, and in English on themes of climate, gender, and culture. Her work can be found on social media, Instagram, Facebook, YouTube, on her channel Heart versus Mind. She is an economist by academic training. She was born and raised in India and now lives in New Jersey with her husband and 2 children. And she is my schoolmate, and I really appreciate that she's here. Over to you, Nidhi. Thank you, Alka. So first off, definitely thank you very much, Alka, Reza Health, for having us here. Such a topical conversation. And then thank you also to Tashi, who really led us to a very mindful journey. And then you gave us some insights. But these are things, so we can go between Hindi English, or do you want me to stick to one particular language? Anything is fine. It's like keeping it conversational. तो मुझे लगता है कि जो भी topics आप दोनों ने cover किया अभी तक, ताशी and जैसा अलका, I mean बहुत ही मतलब very very incisive, simple सी बात लेकिन कितनी महत्वपूर्ण types, that is the thing. So for example, Tashi, you mentioned the spices. मतलब they mean so much to us in our Asian cooking definitely, but increasingly हमें पता चल रहा है कि spices का कितना महत्व है. And but the thing is, spices should be taken as spices. हम लोग overdo कर देते हैं, right? Typically अब जैसे हल्दी है, हल्दी बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये हो रहा है कि पाक भर भर के लोग हल्दी खा रहे हैं. उसके अपने side effects होंगे. I'm very sure both Tashi and Alka, you both know. नहीं मालूम होता, right? yeah, Yes, you are right. Tashi wants to say something. No, you are right. Alka, Nidhi, you are absolutely right. हाँ, इंसान यही कहते क्योंकि because सबको पता है अभी कि हल्दी की वैल्यू कितना है और हल्दी कितनी अच्छी हर्बल है, जो मेडिसिन है, जो हमारे शरीर पे काम करता है. लेकिन हल्दी की वो अपने एक तासीर है, जो उसकी हल्दी की तासीर जो है वो गर्म है. अगर हम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर हमारे बीपी हाई हो जाते हैं, हमारे ये कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाते हैं. जब कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाते हैं तो हमारे शरीर की पानी कम हो जाते हैं, पानी कम हो जाते हैं तो फिर सांस फूलने की ये प्रक्रिया या सब शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए हल्दी लेना है तो लीजिए, क्योंकि लेकिन बिल्कुल थोड़े मात्रा में, यानी कि एक चुटकी सुबह उठ के गुनगुना पानी में खाली पेट में लीजिए. बस ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा. Over to you, Nidhi. Thank you. So yes, without much ado, क्योंकि मेरा introduction और मेरा वजूद यहाँ एक शायरा की तरह है, तो मैं I will not step on any other territory, क्योंकि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है. हम okay. तो मैं वही वाली पढ़ रही थी पहले, which is इतनी सारी फाइल्स की होती है ना हमारी all the time. That is another cluster that we live in. Okay, so here goes. तो कविता का शीर्षक है, ये आम बात नहीं और है भी. सारे साल जो आम मिलते हैं, सच वो बहुत आम है. And so the pun on आम word is being utilized here. सारे साल जो आम मिलते हैं, सच वो बहुत आम है. गर्मी संग जो आते हैं, बस वही आम खास है. वो आम ही क्या जिसका दिलरुबा सा कोई नाम नहीं. वो आम ही क्या जिसका दिलरुबा सा कोई नाम नहीं. साल भर मुंह मांगे जो मैंगो मिले,
वो बस एक फ्रूट है, आम नहीं। फ्रूट तो केला भी कहलाता है, पर केले से कहाँ गर्मी में सुकून आता है। फलों का राजा, खट्टा तो कैरी का नटखटपन, पके तो चीनी की मिठास, गर्मी एक सजा लगे जो आम ना आए उसमें। The end. So this is on the availability of the, हमारा स्पेशली इंडिया की गर्मियों में आम की जो एक वो है इम्पोर्टेंस, वो तो बहुत Yeah. ज्यादा है, राइट? एंड Right. Yeah. अलका, अगर आप पे वक्त हो तो उसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए मैंने इन द रीसेंट टाइम एक और लिखी थी पिछली अच्छा। गर्मी में, Okay. तो वो भी मैं पढ़ देती हूँ, मतलब देयर इन द सेम लीग। Okay. 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 खुदा खुदा गर्मी देनी है तो दे, पसीने में भिगाना है भिगा दे, अभी तक तो मारा नहीं है सूरज की गर्मी ने, पर गर्मी दे तो संग दशहरी आम की नरमी दे, पसीने संग एक शिकंजी का भी दे गिलास, शिकंजी ना सही पर दे दशहरी की मिठास, दिन के खाने के बाद सोने को एक घंटा तो दे, रात के खाने के बाद एक दशहरी आम कटा तो दे। And since I'm also a climate activist, this takes into that. ऐ खुदा तेरी धरती जल रही है मुझे खबर, मैं ही जिम्मेवार हूँ ये भी है एहसास, मैंने ही बगीचे बेचकर इमारतें बनवाई हैं, पेड़ों को काटकर मशीनें लगवाई हैं, मैंने ही पहाड़ों में बेदर्दी से कूड़ा फैलाया है, मैंने ही कतरा कतरा समंदरों को जहर बनाया है। हाँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ ये भी है एहसास, पर गर्मी में सह न पाऊंगी जो दशहरी ना हो खास, वादा है मेरा बनाऊंगी मैं फिर दुनिया हरी भरी, ऐ खुदा गर्मी दे बस संग दे कीला दशहरी। The end. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Thank you so much. Beautiful. Wow, it was so beautiful. I'm a big fan of you. Thank you. काशी ऐसे फैन वैन नहीं, हम आपस में बस एक दूसरे का सब हौसला अफजाई करते हैं, and I think that is so important. Always you leave such an encouraging mood for my poetry, and that is very heartwarming. And Alka, you also, so thank you so much. Thank you, Nidhi. I really appreciate you taking time, out of your busy schedule, and you and Tashi both. I really appreciate for supporting me coming here today. You guys didn't have to, but you did. Oh, always, Alka. Thank you. Always Alka, and I mean for I mean just the fact that Alka and मैं तो Tashi we are batchmates, तो हमारी दोस्ती तो इतनी पुरानी है कि I don't think हमारे बीच में कुछ भी वो हो सकता है, like it can never be a formality. Alka बोले Yes. है ना, तो मतलब it's like a sister saying, so I think it works that way. Yes, definitely. Yeah. So we'll wrap up. I think, I don't know if Dr. Mayur, are you there? Ruchika, would you like to say something? No, thank you so much to all the speakers. It was very informative, and I look forward to such sessions in future. Yeah, actually, Uttara couldn't make it today. Okay. He got stuck somewhere. Mhm. So we'll have to wrap up earlier than expected. No problem. But it was very good. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Appreciate it. All the best. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. See you. Bye-bye. Bye. सिर्फ खाने वाले नहीं है, तो बताने वाले आप लोग हैं। Okay.